Student, can you hear me? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, okay. Good morning once again. So like on the first day of my class with you all, I have taught you the first chapter, isn't it? That was, what was the name of that chapter? What was the name of that chapter? अरे what was the name of the chapter? मैंने सबसे पहले तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास में मैंने सबसे पहले एक क्लास लिया था ना, वो क्या चैप्टर था? Acute renal syndrome. Okay, acute renal failure. Acute renal failure. Okay, okay, good, good, okay. So about that acute renal failure, which like we already discussed, it's not it. And some of you, I guess, like you have left your copy in the hostel, isn't it? Yes or no? Let me take an example, Sheetal. Yes, ma'am. Okay, so like Yes, so today class, you listen carefully. Okay, acute renal failure. Let us discuss again so that like before final exam, na? Like if you won't study also, like you will be able to write everything just by understanding. So acute renal failure, what was renal failure? It was the failure of the kidney to function adequately. And I'm repeating again and again, like don't ever get confused the differences between renal failure and acute renal failure. Like I have given you all separately, okay? Okay? Is it okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let us discuss again renal failure. Renal failure, it was the failure of the kidney to function adequately. So हमारा जो किडनी है जो अच्छी तरह फंक्शन नहीं होता है, like जैसा फंक्शन होना था वैसा फंक्शन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं renal failure. That is only renal failure. और अभी acute renal failure क्या है? It is the sudden decline in renal function, which is usually marked by yes, let us see one by one. Decreased glomerular filtration rate, जो GFR है ना, glomerular filtration rate, वो कम होगा, वो decrease होगा, लेकिन जो BUN, that is blood urea nitrogen, वो increase होगा. There will be increase in BUN, and then as well as that creatinine, and the urine output should be less than 400 ml per day, जिसको oliguria बुलाता है. And then again hyperkalemia and sodium retention. So like all these feature, understand, all these feature, if you will find in a person, then you can consider that a person have acute renal failure. Did you get my point? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. Okay, so can I ask you all now? Are you confident? Srijana have some issues, so she won't be able to on her video, which I understand. What about Dibyajit? What happened? Virginia, Baboglangs, Bishal, Shital, Rudolph, Shelly. On your video, you could see now your friends. See, they're very disciplined. Every one of them, they on. Even today, Surajit is very excited to on the video. I have on, ma'am. Okay, okay. I think because of like network issue, no? Okay, okay, no problem. Okay. Okay, if do you want to ask me any question about the renal failure and about the acute renal failure? Do you want to ask me any question? No. Shall I explain for the last time? Yes, ma'am. Shall I explain again for the last time? Yes, ma'am. Okay, अच्छी तरह सुनो, ये मैं acute renal failure कभी भी और मैं repeat नहीं करूंगी, अच्छी तरह सुनो. Like in your this semester, I will never repeat again. So listen carefully. Acute renal, जो renal failure है,
वो हमारा किडनी जैसा फंक्शन होना था वैसा फंक्शन नहीं होगा because of some problem in the kidney or some abnormalities in the kidney. उसका वजह से अच्छी तरह हमारा किडनी फंक्शन नहीं होगा. That is known as renal failure. And what is acute renal failure? First, let me explain in Hindi. Acute renal failure का मतलब है अचानक से किडनी जैसा फंक्शन होना था वैसा फंक्शन नहीं होगा, अचानक से डिक्लाइन होगा. तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज दिखाई देगा, जैसे कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है GFR वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और हमारा जो BUN है, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन जो है वो बढ़ जाएगा, उसका जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दैट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन. और इसके बाद जो हमारा यूरिन आउटपुट है ना, जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, उसका लेस देन 400 ml पर डे. तो उसका 400 ml से कम हम लोग रोज दिन यूरिन एक्सक्रीट करेगा, उसको उसका दूसरा टर्म है ओलिग्यूरिया. और उसके साथ साथ हाइपरकैलेमिया भी होगा, जो पोटेशियम का लेवल बहुत हाई होगा, उसके साथ साथ सोडियम रिटेंशन भी होगा. सो लाइक those who want the explanation in Hindi, is it clear enough? Is it clear enough? Yes, ma'am. जिसको हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, उन लोगों को ज्यादा समझ में आया? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, okay, then let's move on. Etiology. So ये कभी भी कंफ्यूज मत होना हाँ, कि acute renal failure में तो BUN डिक्रीज होता, क्या इंक्रीज होता, क्या डिक्रीज होता, ये सब जानना पड़ेगा. और यूरिन आउटपुट भी कभी कंफ्यूज होता है ना, कभी एनूरिया दैट इज लेस देन 400 पर डे, ये सब होता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. तो ये acute renal failure में it is less than 400 ml per day. Finish. That's the introduction part. That is about the renal failure and acute renal failure. Now let's come to the etiology. Etiology का दूसरा नाम क्या था सुरजीत? मैंने yes, very good. Okay. जिंदगी में कभी मत बोलना that etiology means causes, so don't ever get confused. Okay, let's move on. In the causes of acute renal failure, we got the 3 points. That was the pre-renal, post-renal, and the intra-renal. So, Trishna, can you please tell me pre का मतलब क्या है? Pre. Hurry up, don't waste time. Ma'am, before kidney fail. Okay, very good. Okay, pre. Okay, Virginia, what is post? Post renal, post का मतलब क्या है? Post. Sudden obstruction. Post. I'm just asking the meaning of post. POST. Pre post बोलते हैं ना हम लोग. Pre तो पहले, तो post क्या होगा? Suddenly. Post. Any idea? Any idea? Post. Anyone? After. Ma'am, after. Okay, good. Okay, so pre-renal में like क्या पढ़ा था हम लोग pre-renal में? Just don't get confused, okay? Like only in the acute renal failure, okay? सिर्फ acute renal failure में 3 टाइप का causes होता है, जैसे कि pre-renal, post-renal और intra-renal. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं pre-renal. What is pre-renal? Pre-renal is the sudden, वो अचानक से, sudden and severe, बहुत ज्यादा उसका जो disease है बढ़ जाना, sudden and severe drop in blood pressure. तो अचानक से बहुत ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर जो बीपी है कम हो जाएगा. तो अचानक से किसी इंसान का बीपी बहुत ज्यादा severely कम हो जाने से that can lead to what? Ishan? That can lead to what? Ishan, can you hear me? Or there is network problem? Ishan, can you hear me?
Yes, ma'am. ओके ईशान, अगर किसी का अचानक से सडनली और अचानक से उसका बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया, ब्लड प्रेशर, सो दैट कैन लेड टू व्हाट? अपना नोट्स में देखो, दैट कैन लेड टू अचानक से, इट्स नॉट लाइक पहले से उसका ब्लड प्रेशर लो था या ज्यादा था, व्हाटएवर, अचानक से सडन. Okay, Baboglang, can you please tell me the answer? Baboglang, Sudden and severe drop. Yes, ma'am. if there is sudden and severe drop in blood pressure, okay? Sudden and Yeah, if there is sudden Yes, and ma'am. severe drop in blood pressure, okay? So that can lead to what? That can lead to what problem? Who want to answer? Please raise your hand. Who want to answer? Please raise your hand. Who want to answer? Anyone? shock, ma'am. Shock. Yes, very good, Baboglang. ईशान सुनो, अगर किसी का सडन और सीवियर, अचानक से किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाने से that can lead to shock, okay? Okay? Yes or no, everyone? Shock, S-H-O-C-K, shock. Understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us revise again. So sudden and severe drop in blood pressure or interruption of blood flow to the kidney from severe injury or illness. अगर कुछ injury या फिर बीमारी का वजह से, if there is interruption of blood flow to the kidney, means जो kidney means kidney में जो blood flow होता है ना, if there is any problem or if there is any interruption, okay, in the blood flow to the kidney, okay, maybe because of injury or illness, so that is termed as pre-renal. That can lead to acute renal failure. So that was all about pre-renal. So let us move on to intra-renal. So intra-renal means there will be direct damage to the kidney by inflammation. During exam, like you all get so much confused. I have given you the test on this. It's not even the question paper also I gave you. So like some of you, like you used to get very confused. कोई pre-renal का आंसर का जगह में intra-renal का आंसर लिख देता है, because you used to get confused. So never get confused. Intra-renal means there will be direct damage to the kidney by inflammation. Because of the inflammation that occurs, isn't it, in the kidney, there will be direct damage to the kidney. So don't get confused. And because of the toxins, because of some drugs, infections, or reduced blood supply. So this is all about intra-renal. Are you clear? प्री-रीनल, इंट्रा-रीनल या पोस्ट-रीनल, कौन सी वाला कॉजेस में हमारा किडनी में डायरेक्ट डैमेज होता है? Anyone? Internal. Intra-renal. Okay. Internal. Next. Yes. Intra-renal. Okay. Let's move on. Next is post-renal. Sudden obstruction of urine flow due to enlarged prostate. तो post-renal में क्या होता है कि sudden obstruction means कुछ ब्लॉक हो जाना. जब तुम यूरिन पास करती हो ना, अच्छी तरह यूरिन पास नहीं कर पाती, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कुछ ब्लॉकेज. देयर इज सम ब्लॉकेज और देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरिन फ्लो. व्हाई दिस ऑब्स्ट्रक्शन occur? Due to enlarged prostate. So because of the enlarged prostate, there will be obstructions of the urine flow, and the kidney because of the kidney stone and because of the bladder tumor, अगर bladder में tumor हुआ, अगर kidney में stone हुआ, or else because of any kind of injury, all these problem, all these causes, this can lead to acute renal failure. So all of you are clear about pre-renal, intra-renal, and post-renal? If no, फिर से बोलना. Post-renal explanation. Post-renal.
Yes, ma'am. Okay, post renal means ना हमारा जो नॉर्मल यूरिन है ना, लाइक नॉर्मल यूरिन जैसा फ्लो होना था ना, यूरिन जैसा यूरिन पास होना था वैसा पास नहीं होगा. देयर विल बी सम ब्लॉकेज, कुछ ब्लॉकेज होगा. ये ब्लॉकेज केस क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, या फिर बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन, या फिर बिकॉज ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, या फिर कुछ इंजरी होने का वजह से. आर यू क्लियर? All of you? Rasmi, Sonowal, are you clear? Yes, ma'am. Okay, okay, let's move on. नहीं तो मैं ऐसा दे दूंगी कि acute renal failure में एक्सप्लेन करूंगी, रिवाइज करूंगी, मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगी, कोई प्रिपेयर करके एक्सप्लेन कर देगा, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ, but I won't do like that. So, but if you would respond nicely, then I will give you presentation. Do you want presentation or you want me to explain? Say, अगर कोई भी जवाब You to explain. Okay, okay. Okay, let's move on. Let's move on to different terms used in renal disease. मैंने दिया था ना different term used in renal disease. Yes, ma'am. क्लास अच्छी तरह सुनो, सबको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने से ओ ये वाला तो मैंने पढ़ा था, मीन्स लाइक सपोज यू फॉरगेट टू स्टडी, ओके, टाइम कम हो गया नहीं पढ़ पाया, बट स्टिल यू विल हैव आइडिया, कि तुम्हारा दिमाग में आइडिया होगा और जिंदगी भर नहीं भूलोगे. यू विल नेवर फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ. सो व्हाट इज एनूरिया? एनूरिया का मतलब ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, ओके, एब्सेंस. ए का मतलब एब्सेंस, एनूरिया. Anuria matlab complete cessation of urine flow of daily urinary output less than 100 ml. जो यूरिन आउटपुट हम जो यूरिन एक्सक्रीट रोज दिन जो हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं ना, वो 100 ml से कम होगा, तो उसको बोलती है एनूरिया. विशाल, आर यू लिसनिंग? विशाल, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay. Yes, ma'am. Okay, okay. This different term. After explaining, ना, I want to ask you all. मैं सबको पूछूंगी एक एक करके, because this term you can never forget. Anuria. Anuria का मतलब हमारा जो यूरिन एक्सक्रीशन है, एवरीडे का जो यूरिन एक्सक्रीशन है, वो अगर 100 ml से कम हुआ तो उसको बोलते हैं एनूरिया. ओके, डन. लेट्स मूव ऑन. ओलिगुरिया. ईशान, ओलिगुरिया एक्सप्लेन करो तो. ईशान, ओलिगुरिया. Oliguria. On your audio. Ishan, on your audio. Student, can you hear Ishan voice? No, ma'am. Okay, okay. Ishan, speak loudly. Ma'am, Yes. ma'am, urine output less than 400 ml per day. Okay, 400 ml. Vishal, is it correct? ईशान ने बोला कि यूरिन आउटपुट अगर 400 ml पर डे कम होने से ओलिगुरिया कहलाता है, तो इज इट करेक्ट? विशाल, इज इट करेक्ट? Ma'am, Yes, ma'am. Okay, okay, good. Next, let's move on. Polyuria. पोली नाम सुन के ही पोली का मतलब ज्यादा. अंडरस्टैंड? क्लास 8, 9, 10 में साइंस में मिला था मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ऑल दोस थिंग्स. तो पोली का मतलब क्या है? पोली मीन्स ज्यादा होना. तो it referred to persistent increase in urine volume of more than 2 liter per day. तो रोज दिन हम जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, अगर 2 लीटर से ज्यादा हुआ, 2 लीटर या फिर 2 लीटर से ज्यादा हमने एक्सक्रीट किया, तो उसको बोलते हैं पोलीयूरिया. If we excrete or if our urine volume of excretion is more than 2 liter per day, then it is termed as polyuria. Are you clear? All of you? Yes, ma'am. Okay, okay, good. Next, dysuria. Dysuria, I always ask to Ilasara. So Ilasara, can you please explain to your friend dysuria? Dysuria is the burning sensation while passing urine.
or burning sensation during masturbation. Yes, okay, correct. Okay. Finisha, what is micturition? Finisha, what is micturition? Finisha. I don't know, ma'am. Okay, no problem. Malvina, what is micturition? Malvina? Yes, ma'am. Passing the What? urine. Yes. Micturition का मतलब जो urination हम जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं micturition. That means during micturition, that means during urination. समझ में आया everyone? Yes or no? Any response? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So जब हम urinate करते हैं, we feel pain. We feel pain. Okay. Pain during urination. जब urine pass करती है तो बहुत pain feel होता है जब urine pass करती है. And when we urinate, we feel pain, burning sensation. That is known as dysuria. Okay. I won't repeat again. Is it okay? Okay. Okay. ma'am. Next. Okay, let's move on. Hematuria. सूरजीत बताओ हेमाटूरिया क्या है? मैं इतना बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ. सूरजीत बताओ हेमाटूरिया क्या है? सूरजीत Blood pressure. सुनाई नहीं दिया. सूरजीत Blood explain. pressure. Yes, blood present in the urine. Okay, very good. Hematuria means Blood present. present. Okay, Surajit, good. I could hear you. Hematuria. Hematuria means presence of blood in the urine. So no need to explain. Everyone know this. So now my question is, if there is presence of blood in the urine, isn't it? So what will be the color of your urine? What will be the color of your urine? नॉर्मल यूरिन का कलर तो सबको पता है, लेकिन अभी पता चला कि अगर तुम्हारा यूरिन पे ब्लड है तो यूरिन का कलर क्या होगा? What will be the color of urine? Will it be dark? Will it be dark? Will it be dark? यूरिन में ब्लड है तो will it be dark? Yes or no? या फिर पूरा सफेद होगा? Dark होगा. Dark. Okay. Next, I give you our strangury. It means painful desire to pass urine through. It means na painful desire to pass urine though the bladder is empty. Means bladder empty hai, lekin there will be like a painful desire to pass urine. So that is strangury. Then after that GFR. So GFR का full form तो सबको पता है, glomerular filtration rate. It means that the amount of plasma means plasma ultrafilter formed by both the kidney in each minute is GFR, and normal GFR is 115 to 125 ml per minute. All this you need to know. Try to know this normal value of glomerular filtration. Okay. क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है ना, लाइक उसका एक्यूट रीनल फेलियर का डेफिनेशन में भी क्या मिला था वहां पे, you got decreased glomerular filtration rate, is not it? So in the definition itself you have studied that glomerular filtration rate is decreased. So how you will come to know that glomerular filtration rate is decreased? तब अगर तुम GFR का नॉर्मल वैल्यू पता होगा, तब तुमको तुम बोल सकती हो कि उसका GFR कम है. जैसे कि we know ना the normal value of blood pressure. So blood pressure तो 120 by 80 mm of Hg is not it. So in that way you can, after taking the blood pressure of anyone, you can just say that oh इसका तो blood pressure ज्यादा है, इसका तो कम है. तुम ऐसा कैसे बोल पाओगे until and unless you will know the normal value. So try to know the value of GFR, then you can describe that it is increase or decrease. Are you clear, all of you? Shall we move on? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Today Samuel is absent. Okay, I could not see. Okay.
Where is Nunu and all? Nunu, I could not see your video. Rudolph, are you sleeping and you just on the you just join it? Ma'am. Yes. Okay. Ma'am. Nunu. Yes, Nunu. Who is that? Okay. Ma'am, my face is that this I can't show you. Okay, no problem. Rudolph, what happened, Rudolph? जो वीडियो ऑफ करेगा मैं उसको सब पूछूंगी और नेक्स्ट टाइम उसको प्रेजेंटेशन देने को बोलूंगी, तब पता चलेगा what is the meaning of like what is the meaning of keeping your video on and off. Rudolph, breakfast? Yes, ma'am. On your video, you feel shy or what? See all your friends are they on their video. It's very nice to see everyone. Or you want to explain everything first to last? Share your feelings, Rudolph. Okay, means if you off your video, I will feel that this Rudolph want to explain, so I should give him an opportunity. I should think in that way. Is it okay, Rudolph? No, ma'am. Okay, don't off your video. Okay. Whom I will request? Ilasara, are you free? Ilasara? Yes, ma'am. Okay, Ilasara, can you please take the attendance of today, okay? As Regina is on some, like, little bit of some work, okay? So, she's joining, but she has some issues. So, Ilasara, can you please take attendance? Like, you can just take the screenshot of everything and later on you write down and you just send me, okay? Okay, ma'am. The participant name is appearing, right? Yes, ma'am. Okay, you can just screenshot it. Okay. Okay, next let us discuss about the risk factor. So the conditions that increase the risk of acute renal failure. क्या क्या condition हो सकता है उसका causes होने का बावजूद भी दूसरा क्या risk factor हो सकता है कि like that increases the risk of developing acute renal failure. So number one, being hospitalized, especially for a serious condition that required intensive care. जो ICU में जो being hospitalized, जो hospitalized होते हैं और जिसका intensive care है, that means intensive care means like critical care, जो critical care में है और जिसका उम्र बहुत ज़्यादा है, advanced age, and then again if there is any blockage in the blood vessels in the arms or legs, and then again अगर किसी का diabetes हुआ, diabetes mellitus हुआ तो उसका acute renal failure, उसका kidney failure होने का बहुत chances है जिसका उम्र ज्यादा होता है, ओके, और जिसका डायबिटीज होता है, या फिर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड है और जो बहुत क्रिटिकली इल है, ऑल दोस, और सबसे कॉमन जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, देयर इज हाई ब्लड प्रेशर्स, एंड देन जिसका हार्ट फेलियर, ऑल दोस हार्ट फेलियर, हार्ट मींस कार्डियक प्रॉब्लम, ओके, जिसका हार्ट फेलियर है, एंड एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज, किडनी का कुछ भी डिजीज, किडनी ट्यूमर भी हो सकता है, किडनी का कैंसर भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज, अंडरस्टैंड? सो उसका किडनी में सीज भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी हो सकता है, तो एनी काइंड ऑफ किडनी डिजीज दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर टू डेवलप एक्यूट रीनल फेलियर. और उसके बाद लिवर डिजीज, सो लिवर में अगर फैटी लिवर हुआ या फिर एनी काइंड ऑफ लिवर प्रॉब्लम हुआ तो ऑल दोस आर हैविंग अ ग्रेट चांसेस और दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट रीनल फेलियर. सो अच्छे से सुनना, लेट मी रिपीट वंस अगेन. रिस्क फैक्टर किन किन लोगों को रिस्क फैक्टर है कि रिस्क है ये एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप होने का. सबसे पहले द वन हु आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, नॉट ऑल दोस हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, हॉस्पिटल में भी जो क्रिटिकली इल होता है, जो आईसीयू या फिर एनीवेयर जो क्रिटिकली इल होता है और जिसका उम्र ज्यादा है, दैट इज एडवांस एज. एंड द अदर वन, इफ देयर इज ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स, हमारा आर्म पे लेग पे अगर लाइक वहां पे अगर ब्लॉकेज हुआ तो ओके ब्लड वेसल्स,
और जिसका डायबिटीज है, शुगर लेवल बहुत हाई है, एंड देन जिसका बीपी बहुत हाई है, 120/80 mm of AG से ज्यादा है, और जिसका हार्ट फेलियर हुआ, जिसका किडनी डिजीज हुआ, जिसका लिवर डिजीज हुआ. So all these are the risk factor of acute renal failure. Are you clear? Yes or no? Divyajit? Divyajit, are you clear? Yes, ma'am. I can't hear Divyajit. Divyajit, are you clear? Yes, ma'am. Okay, okay. Surajit, are you clear? Surajit? Yes, ma'am. Okay, okay. Everyone, all of you, are you clear? Because with this, we will end today's class. So that's why I'm asking again. Are you clear? Or else I will take your class again. We will off this. You have to join again. Or this much is enough for today. Enough for today. Okay, okay. Okay, you understand, right? Whatever I have explained today, from the definitions, from the causes, I have explained the definition very nicely, very clearly. Acute renal failure और renal failure का definition difference अच्छी तरह explain किया. उसके बाद उसका 3 causes से अच्छी तरह explain किया. उसके बाद different term जो मैंने दिया, anuria, oliguria, everything I explained very nicely. After that उसका risk factor तक explain किया. So till here, do you want me to ask anything? Do you want to ask me anything? Anything? Any question? Any question? All of you on your video audio? Because I can't hear anyone, so I feel like I'm speaking alone. So Yes, ma'am. okay, next time if I ask still here, will you be able to give the answer even without turning the page? Yes. Even without turning the Yes, page? Okay, okay. We'll do something like this. Like Srija, oh, this Ilashara, did you take the screenshot? Yes, ma'am. Okay, after that you write down how Srijana used to write. Okay, you write it down and then you just send in that group. Okay. Yes, ma'am. Okay. And you differentiate like who are 2nd semester, who are 4th semester. Okay. Okay. Do you like today class? Yes or no? Yes. Okay. Then thank you, everyone. We'll continue tomorrow. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Okay. Have a nice Ma'am. day. Thank you, ma'am.